की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। अब गया वक्त खिज़ां, अब गया वक्त खिज़ां, आए हैं फल लाने के दिन, 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 आए हैं फल लाने के दिन। दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, शोर है। छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं, छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं। अब तो है ए दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन, अब तो है ए दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन, दी के गुन गाने के दिन, दी के गुन गाने के दिन। अब तो है ए दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। क्यों गजब भड़का खुदा का मुझसे पूछो गाफिलो, क्यों गजब भड़का खुदा का मुझसे पूछो गाफिलो। हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन, हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन, मेरे झुटलाने के दिन, मेरे झुटलाने के दिन। हो गए हैं इसका मूजिब मेरे झुटलाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, शोर है। गैर क्या जाने के गैरत उसकी क्या दिखलाएगी, गैर क्या जाने के गैरत उसकी क्या दिखलाएगी। खुद बताएगा उन्हें वो यार बतलाने के दिन, खुद बताएगा उन्हें वो यार बतलाने के दिन, वो यार बतलाने के दिन, यार बतलाने के दिन। खुद बताएगा उन्हें वो यार बतलाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। अब गया वक्त खिज़ां, आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन। Je suis Madame Ouattara Abiba. Nous sommes venus faire la consultation. On nous a dit qu'il y avait une consultation ici et nous sommes là. Effectivement, on nous a consultés. Nous avons reçu les médicaments gratuitement, 105 francs. Et voilà, on vous dit merci. Bonjour à tous, je suis Madame Kone Abiba. Nous sommes à Soko aujourd'hui pour une consultation. Voilà, la consultation est réelle. Tout le monde est présent. Je me suis fait consulter. J'ai reçu des produits. Voilà. Donc j'ai reçu de la vitamine, voilà, de l'ibuprofène. Voilà, tout ce qui me concerne, concernant ma santé, j'ai tout reçu. Voilà. Donc j'invite tout le monde à venir. C'est gratuit, on ne prend pas de l'argent. Donc
on invite la population à venir. Merci, bonne continuation. Salam alaikum warahmatullahi. Ndobe Abaka Sidik. ONG Mornana, Arbe Morbarra, ni Sraya Dobera, ni Kanari Fere Kafladima. Arbe Silamachi Likera, O Silamachi Alambie Deme, O Mo Makene, Inana, if Abel Flakera Kaduli, Armada Skelim in a word chife, Don Abiar Fura, Arkas Chiemi Kumaseta, Sara Lebi Alay Alarlea Sara, Don Amdur Fanan Abiar Fura. Assalamu alaikum. Ok, donc vous avez là un patient de la localité de Soko, le village de Soko à quelques kilomètres de la frontière du Ghana et également quelques kilomètres aussi de Bondoukou. Donc il remercie l'ONG par rapport à l'activité du camp médical qui est menée et il tient à informer les gens qu'effectivement les médicaments qui lui ont été donnés sont faits de manière gratuite et que les consultations, tout s'est fait gratuitement. Donc c'était un peu son message de remerciement à l'endroit de l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire. Je suis le docteur Hervé Gérard Mangwa, directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Bondoukou. Alors je suis là ce matin pour venir superviser, visiter un peu les activités qui se passent à Soko. Soko, c'est un village qui est situé à peu près 2 à 3 km de Bondoukou, où une ONG du nom de Humanity First mène des activités de santé. Il s'agit d'un camp de santé qui va permettre de pouvoir recevoir un certain nombre de patients qui souffrent de maladies habituelles, de maladies chroniques, et faire en sorte que nous puissions aussi dépister les maladies chroniques. Voilà un peu l'objet de ma visite. En plus de ces activités qui sont menées, nous avons voulu qu'on puisse sensibiliser les populations qui sont venues pour la couverture maladie universelle et faire en sorte que les enfants âgés de 0 à 59 mois qui n'ont pas été vaccinés ou qui ont été incomplètement vaccinés puissent être vaccinés, puissent être rattrapés. Donc voici les 2 activités que nous avons pu intégrer dans le paquet déjà d'activités qui est déjà mené par l'activité. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier l'ONG Humanity First avec toute l'équipe ici présente pour tout ce qui est fait à l'endroit des populations de Soko. Merci beaucoup. Diré Kouakou, directeur régional de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Je viens là par rapport à cette activité humaniste, humanitaire que Humanity First est en train de déployer par rapport à la population. Il ne s'agit pas uniquement de religion, c'est tout le monde qui est impacté. Il y a aussi le don de sang, il y a les maladies qui sont là en cette fin d'année. Si l'ONG a eu l'occasion de le faire, je me suis senti obligé de venir accompagner la jeunesse qui est vraiment à la frange la plus importante de toute notre population. Et donc, on donne tous l'exemple. Je vous remercie.